Okay, next one. So we studied about torque and everything, right? Last class, mein torque and everything. Now we'll go for the. Our intention is to tell the Gauss law. Gauss law is the shortcut to find the flux. Okay, so आपको you have to know basically about area vector के बारे में terminology you have to know. Then we have to know about flux. Then Gauss law. Then only you will understand these two terminologies आने के बाद only Gauss law will be coming. Okay, so इसके लिए आपको एक एक terminology learn करना पड़ेगा. That is first one is area vector. Area vector. Now here area is a vector only. Okay. Area vector. How to find area vector? We will see. Suppose you have x-axis, y-axis, and z-axis. Z-axis is coming towards you. Okay. Here I am putting one square in the xz plane. xz plane में x square है. Okay. Of side A. इसका area vector. इसका area vector I want to find. Okay. How to find area vector? इसका name दे दो. A, B, C, D. In xz plane में I want to find area vector. You know area vector means cross product of any two sides is nothing but the for the area of a square in vector form में, right? So area vector का symbol है A. Cross product of two vectors like anything AD into AB. AD cross AB. Cross product of two vectors. And you know cross product of two vectors का formula क्या होगा? A cross B का formula is AB sin of cos A. AB sin theta. So इसका side is A into A sin 90, right? Square का only. Cross product is for only for square. Triangle का अलग है, right? So A square into, you know, cross product is a vector quantity, right? You have to keep n cap. Unit vector perpendicular to the two vectors. Okay, tell me, इसे perpendicular xz plane है, this is x, this is z plane. इधर एक square रखा, उससे perpendicular vector कौन सा है? Which cap we have to put? J cap. J cap. Okay, so it is nothing but a square j cap. Okay, a square j cap. Okay, here you can keep the direction in the downward direction also, or a square minus j cap. Okay, in this is a two-dimension, two-dimension body, right? So आपको ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, perpendicular vector लगाने का, unit vector. तो एरिया वेक्टर फाइंड करना सीखो. एरिया वेक्टर का सिंपल क्या करने का, आपको वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा. एरिया वेक्टर आपको ही ड्रॉ करना पड़ेगा. सपोज इस सरफेस का एरिया वेक्टर मींस यू हैव टू पुट वन एरो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन. वन दिस इज एरिया वेक्टर, आइदर दिस और दिस फॉर 2D सरफेस के लिए. इस सरफेस का एरिया वेक्टर मींस यू हैव टू ड्रॉ वन वेक्टर दैट इज एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑलवेज, एंड इसका डायरेक्शन लगाने का ऑलवेज. ओके, चलो नो करो. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. मान लो एक सर्किल इज देयर. ओके, एंड इसका रेडियस इज आर, एंड इसके एरिया वेक्टर आई वांट. ओके, बोलो. मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट में सेंटर में, सेंटर इज ऑरिजिन. ऐसा है प्लेन. ओके, टेल मी देन एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर इज, मतलब एरिया वेक्टर मींस उसका एरिया इनटू द डायरेक्शन लगाने का. दैट्स इट. एरिया इज हाउ मच? एरिया ऑफ सर्किल इज Pi r square. pi r square into direction. Direction is always perpendicular to surface. Perpendicular to Plus surface. or minus J cap. J cap or pi r square minus J cap. Shyam on the video. Okay. Area vector find करने. So area vector is always for 2D surface के we are talking. 2D surface or open surface बोलते हैं. For 2D surface or open surface का area vector can be any direction, and area vector is perpendicular to plane of the plane to the surface. Perpendicular to the plane. Okay, area vector is always perpendicular to the plane. Okay, try करो. Suppose x
coordinates I can change anything, y and z. Okay, so इस एरिया का ऑफ साइड ए, इसका एरिया वेक्टर चाहिए. इज ए 2D सरफेस, ओपन सरफेस, उसका एरिया वेक्टर चाहिए. A square plus or minus k cap. Yes, good. Area vector is a square k cap or a square minus k cap. देखो अब इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर इज एरिया वेक्टर. परपेंडिकुलर वेक्टर इज नथिंग जेड एक्सिस. जेड एक्सिस इज k cap. Okay. This is for 2D surfaces. 2D surfaces can be any direction. Okay, perpendicular में either backside or origin. But generally in the numericals करने समय एक ही direction we can use. Generally electric field का direction only we are putting that unit vector. Okay, we should not take again उल्टा minus ऐसा नहीं लगाने का. Numericals करने समय एक ही direction fix करने का. Total problem है वही direction you have to use area vector का. Now we'll go for 3D surfaces का. 3D surfaces का एरिया वेक्टर ड्रॉ करना आने का. जैसे ड्रॉ करने आ गए तो देन फ्लक्स आ जाएगा आपको. ओके, डन. नाउ फॉर 3D surfaces, 3D surface is also called as closed surfaces. Closed surfaces. So इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे. सपोज मान लो देयर इज ए 3D surface क्यूब. सपोज 3D surface क्यूब. ओके, हाँ, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या आएगा? इस सरफेस का एरिया वेक्टर देखो ऑलवेज इसमें क्या आएगा मालूम है? एरिया वेक्टर इट इज आउटवर्ड नॉर्मल. इट इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल पर यू नो फॉर 3D सरफेस का. टेल मी इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो बोल तो आउटवर्ड नॉर्मल वी हैव टू ड्रॉ. दिस इज एरिया वेक्टर. इस प्लेट का एरिया वेक्टर ड्रॉ करो बोले तो आउटवर्ड नॉर्मल. ये इनसाइड नहीं रहेगा, इनसाइड नहीं रहेगा. 3D सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल. ड्रॉ करना सीखो. इस सरफेस का एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल. Okay, any surface का outward normal is the area vector. Okay, good morning subject. Violet, इस surface का area vector is outward normal. So area vector draw करना सीखो. Area vector is always for 3D surface का outward normal. Outward normal. Now tell me, इस cylinder का area vector draw करो बोले तो ये 3D surface है ना? How many surfaces we have in the cylinder में? One is top, bottom and curved surface. उन सभी का एरिया वेक्टर ड्रॉ करो बोले तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर, इस सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल एरिया वेक्टर एंड कर्व्ड सरफेस का इफ यू वांट इन दिस में आउटवर्ड नॉर्मल. ये ड्रॉ करना आपको एग्जाम में आपको ड्रॉ करना पड़ेगा एरिया वेक्टर. देन ओनली यू कैन नो एंगल फ्लक्स आएगा. ओके, How will you know how to draw a curved surface? कर्व्ड सरफेस का एनी सपोज इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल. We can draw Okay. anywhere. Anywhere you can draw. Okay, curved surface का. And if I take a sphere, tell me इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करो बोल तो देखो इसका सेंटर वो आउटवर्ड नॉर्मल. ओके, एंड यू नो स्पेशलिटी स्फेरिकल सरफेस का ऑलवेज नॉर्मल पासेस थ्रू सेंटर ओनली. याद है ना, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन ऑल्सो वी डन. स्फेरिकल में ऑलवेज नॉर्मल रिएक्शन, राइट? इज एरिया वेक्टर and always passes through center of curvature. Center. So किस सरफेस का एरिया चाहिए? उस सरफेस का ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल. सो उधर लिख लो पर 3D सरफेसेस का डायरेक्शन इज आउटवर्ड नॉर्मल. एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल. So for 2D surfaces we learned, and for 3D surfaces we learned outward normal. For 2D surfaces it can be any direction, okay, but perpendicular to the plane रहने का area vector. Okay, now with this knowledge we know the area vector, right? We have to go for the electric flux. Electric flux. Electric flux का symbol है phi. Can you guess what is electric flux? Electric flux. सुना होगा नाम नहीं? Electric flux. Tell me. ईशा, something will tell, right? बोलो. Electric flux. No? देखो,
See, electric field and electric flux का तेड़ा है. Electric field will be coming from the charge, right? Whenever you put a charge, the electric field lines are coming around it. Okay. Suppose if I put an area, one square I put, suppose is plate रखा, इधर charge है, electric field lines 10 lines are coming. Okay, 10 lines are coming. Only 3 lines are crossing that area perpendicularly. Those lines are called flux, and remaining 7 lines are nothing but electric field lines. See, all are 10 are electric field lines only. उसमें से 3 lines which is crossing perpendicularly, that all lines are called flux, electric flux. समझ में आ रहा है? Electric flux and electric field का समझ में आ रहा है? Electric field बोलते पूरा 10 lines are coming means that 10 lines are electric field. उसमें से area of cross section जो पार कर रहा है perpendicularly, that is called as electric flux. Okay, so लिखो the number of electric field lines passing perpendicular to the plane surface. Number of electric field lines passing perpendicular to the plane surface. It is called as flux. And flux is a scalar quantity. Flux is a scalar quantity. And उसका formula for uniform electric field में flux का formula है E dot A. A is called area vector. E is called electric field. That's why we studied about the area vector. So इसमें anything wrong? इस formula में देखो, something wrong. इस formula में कुछ wrong है. जल्दी. It can't be vector. ऊपर नहीं रखने का. Okay, vector scalar quantity है ना. E dot A is the formula. That's why answer will never come in I cap J cap. वो number आएगा in flux में. Okay. So E dot A, and if you expand, what will get? E A cos theta. Dot product is always scalar quantity, right? Cos theta. Theta is angle between electric field and area vector. Electric field and area vector. Okay, that is important. आ गया formula. And this is for only for ये formula कब use करने का? When electric field is uniform. Uniform electric field. Uniform electric field. Okay. And can you tell me इसका units क्या होगा? SI units? You can derive from the formula. Always SI units. Electric field का units are F by Q, right? Formula क्या होगा? Units. Newton. Newton का coulomb. Area का? Meter square. So Newton per coulomb meter square is a SI units of flux. Okay. Now अभी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देखेंगे. नॉन यूनिफॉर्म में क्या करेंगे? फॉर यूनिफॉर्म फील्ड E dot A न्यूटन पर कूलम. For non-uniform field, we will simply integrate small flux d phi लेके d5 small flux we are trying to find E dot dA, and उसको we will integrate both sides to get total flux. Integration of d5 is phi, right? Phi is equal to integral E dot dA, and this formula we can use for uniform also. देखो अगर uniform field है तो E will be coming outside, integral dA will be A, E dot A only formula. This formula we can use for uniform also, non-uniform also. But this formula, when you're uniform directly, you can use this one, E dot A. Okay. So two formulas we learned for flux. Here area hai, that's why we are trying to find the area. Area vector we know how to find. Now वो angle बहुत careful से लेने का. E A cos theta. Theta is angle between electric field and area vector. Okay, चलो न्यूमेरिकल्स करेंगे. You know the formula, right? Flux का formula. Electric field is given. What is the electric flux having area vector also given to you? Whether it's uniform electric field or non-uniform electric field. Uniform electric field or non-uniform electric field. Electric field is given to you. This is the electric field.
Uniform. Why? It doesn't have any variables. X, Y, Z नहीं है. So constant values are there. That's why uniform electric field. Find करो. We know uniform electric field में flux का formula. E dot A. 31. Yeah. कितना? 31. 31 देखेंगे. उतना ही आया. यूनिट्स पता कितना है? 31 गॉट. E dot A. E dot A means simply 5 in I dot I is 1, right? So 5 into 5, 5 plus 4 into 2, 8 plus 18. So 31. Newton per coulomb meter square. So 31. Next. Electric field is given vector quantity. Electric flux चाहिए. Area 20 meter square lying in YZ plane. मतलब area vector will be coming, some cap will be coming. Then only you can find. 120. Answer. Yes, correct. YZ प्लेन में बोल तो ऐसा है ना. YZ प्लेन में है वो कौन सा एक सरफेस समथिंग. So definitely area vector will be in the x direction only. I cap. So therefore area vector is 20 I cap because area vector is always perpendicular to the plane. Perpendicular to the plane. So YZ का perpendicular वाला x है ना. खत्म. Electric field you know इस one you know dot product करो. E dot A. So 20 into 6 is 120. Okay. समझ में सीधा understanding है. हाँ करो. Same model. Uniform electric field 5 into this much. Find the flux for this file of a square centimeter on side is given whose plane is parallel to YZ plane. What should be the flux when the same square if the plane makes 30 degrees angle with the x-axis? Nothing करके करो. एक एरिया स्क्वायर है. दैट स्क्वायर कैसा है? YZ प्लेन का पैरेलल में है. X Y Z. It can be Y Z anything also. This is Z is like this. So इसमें प्लेन में एक स्क्वायर इज देयर व्हिच इज पैरेलल. मतलब ऑरिजिन में नहीं है, इधर है पैरेलल में. उस प्लेन में कितना फ्लक्स जा रहा है प्लेन सरफेस में? The answer of the first one is 50. 50. Yes. 50 आया सात्विक. E A right? Yeah, A is I cap only आएगा right? So area is कितना है? 10 into 10 20. But centimeter meter convert करके you got 50. Next one. Now that plane of the what will flux of the same square if the plane makes 30 degrees with the x-axis. X-axis से 30 degrees ऐसा parallel वाला से 30 degrees में है. मतलब पहले ऐसा था ना, बाद में थोड़ा टिल्ट किया. मतलब ऐसा टिल्ट किया 30 degrees में x-axis से.
ऐसा टिल्ट किया. So at that time में what will be area vector? एंगल कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो आई कैप है पूरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऐसा है, राइट? कितना? 5 × 10³ आई कैप मींस एक्स डायरेक्शन में है पूरा. ओके, एरिया वेक्टर इफ यू सी इट विल बी लाइक दिस, बिकॉज टिल्ट हुआ ना थोड़ा, ऐसा टिल्ट हुआ ना, ऐसा टिल्ट हुआ 30 डिग्रीज में. सो एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस, राइट? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. एंगल इज बिटवीन देम इज हाउ मच? 60 degrees, because total is 90, right? Total is 90. It's tilt किया 60 degrees. Now what is the angle between electric field and area vector? 60, 60. right? वो वाला यूज करना पड़ेगा. People will use 30 degrees. Answer wrong हो जाएगा. 25. So 25, yes. समझ में आ रहा है? So आपको एंगल कौन सा लेने का? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. सी YZ प्लेन में स्क्वायर था पैरेलली, बट नाउ इनिशियल तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऐसा था, बट टिल्ट किया ना थोड़ा 30 डिग्रीज में, टिल्ट किया ना, सो ऐसा टिल्ट किया 30 डिग्रीज. सो एरिया वेक्टर गॉट चेंज टू दिस मच. दिस एंगल आई वांट, बॉटम एंगल. ओके, चलो आया समझ में? आया श्रीराम? अंडरस्टैंडिंग? Yeah. टू Wait, so डिस्टेंस. the final answer was? What आंसर इज 25. Oh, yeah. Okay, yeah. Got आया? it. Next. Now we'll try to find for some more problems with the 2D surfaces का. करो. फ्लक्स तो सेम फॉर्मूला, दो ही फॉर्मूला है ना फ्लक्स तो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में वही दो ही फॉर्मूला है. ओके, सपोज एक सर्किल है, इलेक्ट्रिक, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है. ओके, एंगल इज 30 degrees. ओके, ही इज टेलिंग how much flux coming out from this surface if the electric field is there like this. ये ऐसा है, circular area is there like this, electric field ऐसा है, angle 30 degrees में. So how much flux coming out from this circle? उसका रेडियस इज r. ये वाला समझ में ना, ऐसा है ऐसा surface. हाँ. Pi r square E by 2. Pi r square E by 2. हाँ, गुड. देखो फर्स्ट आपको फ्लक्स का फॉर्मूला है E A cos थीटा, राइट? E A cos थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नहीं है ना, एरिया वेक्टर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. आई टोल्ड यू इस सरफेस का एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, either above or below, but always take in the direction of the electric field direction only. Okay, so area vector is perpendicular to surface. Now angle कितना होगा इसका दोनों का 60 degrees. खत्म, यूज करो. E A cos 60. Cos 60 is 1/2. And area is how much? Pi r square. So E pi r square by 2. एरिया वेक्टर ड्रॉ करना आ गया तो फ्लक्स यू कैन फाइंड इजीली. इलेक्ट्रिक फील्ड वही देगा. ओके, नेक्स्ट कॉपी. नेक्स्ट सपोज मान लो नाउ द सर्किल इज इन दिस प्लेन, इन द बोर्ड प्लेन में. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड is like this, angle is perfect this. Now find flux. इसका radius is r. Flux passing through this circle. Now this is in xy plane, a plane में. Zero. Because area vector क्या है इसका? Perpendicular surface. What is the angle between area vector and the electric field? Is 90. 90 degrees है ना. So EA cos 90, that is 0. So flux is 0 degrees. Flux is 0. समझ में आ रहा है? सबसे कंडीशनिंग है एरिया वेक्टर इस सरफेस में परपेंडिकुलर टू सरफेस, इसलिए पहले 5 मिनट्स पहले आने का कॉन्सेप्ट होने के बाद आ रहा है. ओके, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस. वो लगा के क्या तो 90 डिग्री से आएगा. समझ में आ रहा है? चलो
नो करो, मैं थोड़ा क्रिटिकल वाला करो. Electric field is given to this one. Electric field is not only in one direction, no. 3-dimensional. Electric field is 3-dimensional. Okay. The flux associated with the square plate of side √2 as shown in figure. Okay. Electric field ऐसा 3-dimensional में है तो उसमें से कितना फ्लक्स जाएगा. मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए. ई तो है, एरिया वेक्टर फाइंड, देन ओनली in terms of vector form I can find, then only I can find flux. Now area vector find कर देखते हैं. इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर कैसे आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला? आई टोल्ड यू एरिया वेक्टर का फॉर्मूला फॉर अ स्क्वायर इज क्रॉस प्रोडक्ट करने का, राइट? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स. यू कैन डू द क्रॉस प्रोडक्ट एनी टू साइड्स का. आई कैन राइट ए बी इंटू क्रॉस ए डी. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स मतलब ए बी का फाइंड करो, क्रॉस प्रोडक्ट ए डी करो, देन ओनली विल गेट एरिया वेक्टर. मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना पड़ेगा. एडी वेक्टर फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए. दिस ऑरिजिन, राइट? ए ऑरिजिन है. इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा ऊपर में? सी वाई एक्सिस में डेफिनेटली एक्स विल बी 0, जेड विल बी 0. ये रहेगा. बीच में कितना, वाई में कितना है कोऑर्डिनेट्स? हाउ टू फाइंड वाई कोऑर्डिनेट्स? 2√2. बिकॉज साइड ऑफ स्क्वायर साइड से सेम, राइट? सो 2√2. ओके, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया. इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो. मतलब आपको कंपोनेंट निकालना पड़ेगा. इसका एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है एंड जेड डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट में, एंड डेफिनेटली वाई कंपोनेंट तो 0 है. 2, 0 and 2. वेरी गुड. 2, 0 and 2 समझ में आ रहा है? 2√2 cos 45, 2√2 sin 45, दोनों को कोऑर्डिनेट्स 2, 0, 2. साथ ही करो. क्या करा? नाउ फाइंड ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर. ए बी वेक्टर फॉर्म में कैसे आएगा? हाउ टू फाइंड ए बी वेक्टर? सेपरेट करो. आई कैप में आएगा. देखो 2 - 0 मीन्स 2 आई कैप and 0 - 0 is okay, and 2 - 2 is plus 2 k cap. Cross AD vector. AD vector means so 0, 2√2 j cap. Now cross product karo. You know how to find cross product, right? But understanding huh? Wala? See Satvik, E dot A एरिया वेक्टर फाइंड करने का. स्क्वायर का एरिया वेक्टर इज ऑलवेज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड्स इज कॉल्ड स्क्वायर का एरिया. सो क्रॉस प्रोडक्ट में आपको वेक्टर फॉर्म में चाहिए. दैट्स व्हाई वी फाउंड द कोऑर्डिनेट्स एंड वी सेपरेटेड फाइनल माइनस इनिशियल करके वी फाउंड दिस वेक्टर ए बी वेक्टर. डिस्टेंस वी फाउंड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म में. एक क्रॉस प्रोडक्ट का याद है 10th क्लास में, 11th क्लास में? आई जे के. आई क्रॉस जे मीन्स प्लस के कैप, जे क्रॉस के इज प्लस एंड के क्रॉस आई इज प्लस. उल्टा गया तो माइनस लगाने का, राइट? व्हेन डूइंग क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा किया तो माइनस, सेम डायरेक्शन में है तो प्लस. तो साथ ही बोलो 2 आई कैप क्रॉस 2√2 जे कैप कितना होगा? I cross j is how much? I cross j is plus k cap. So कितना होगा इधर? 4√2 k cap. Tell me साथ में k cross j is how much? K cross j उल्टा जा रहा हूँ. -4√2.
minus 4 root 2. I cap. No, उल्टा जा रहा हूँ, k cross j, right? K cross j. So whenever you're going in the clockwise direction, you have to put plus. Opposite direction minus लगाने का. So it is minus 4 root 2 I cap. समझ आ रहा है? ये आता है ना वेक्टर का? हाँ, सीधा गए तो i j k, सीधा गए तो you will use the plus वाला, उल्टा वाला गया तो माइनस में आएगा. हाँ. Now you got area vector. Now multiply and find flux. 8 root 2. No, So final answer 8 root. final answer. Final answer wrong. 8 root नहीं है. माइनस लगा है ना इधर. Minus 8 root 2 plus 16 root 2. अरे 2i cap प्लस ए कितना है? ये आया आपको एरिया वेक्टर का? Yeah. फ्लक्स 1 मिनट 4. ओके हाँ, कितना है? कट ले, आपको कितना है अभी? Minus 8 root 2 I cap plus 16 root 2 K cap. नो, फ्लक्स विल नेवर कम इन i cap j cap. डॉट प्रोडक्ट. Oh, हाँ okay. हाँ. So answer, final answer is Root 2 only. हाँ कट. ओके, पता understanding का फ्लक्स फाइना सी, दिस इज अ मेजर वन, क्रिटिकल. लास्ट टॉपिक इज गॉस लॉ. गॉस लॉ के लिए फ्लक्स चाहिए कंपल्सरी, और फ्लक्स के लिए वी आर ट्राइंग टू फाइंड एरिया वेक्टर वी फाउंड, एंड देन वी आर ट्राइंग टू फाइंड फ्लक्स. फ्लक्स का एक ही फॉर्मूला है ई डॉट ए, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, नॉन यूनिफॉर्म का इंटीग्रल ई डॉट डी ए आएगा. राइट, चलो. नाउ विल गो फॉर 3D सरफेस का फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे. 2D सरफेस का डन. एरिया वेक्टर कैन बी एनी डायरेक्शन में, बट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ओनली वी आर टेकिंग. Okay, now 3D surfaces का how to find the flux we'll see. Okay, देखो, suppose मान लो there is x axis, y axis and z axis. A cube is there, okay, which is in xz plane में. Okay, now electric field मान लो E is equal to E naught I cap, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. इट इज इन दिस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में, पूरा भर के है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, which is passing through cube also, electric field I cap. Okay, I want to find how many surfaces are there. क्यूब में how many surfaces are there? फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, बॉटम में थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, ऊपर 5 एंड उस तरफ वाला 6, ऐसे सरफेस आर देयर. राइट, सभी का फ्लक्स फाइंड करो, सभी का फ्लक्स फाइंड करो, एंड टोटल फ्लक्स आल्सो आई वांट, मतलब 5 1 5 2 so on to 5 6 I want, and total flux also I want. सो ए क्या फाइंड करूंगा? फर्स्ट सरफेस का टेल में 5 1 का फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर इज आउटवर्ड नॉर्मल, आई टोल्ड यू, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लाइक दिस, एक्स डायरेक्शन में. व्हाट इज एंगल बिटवीन देम? 90. So flux 1 is EA cos 90. So first 5 1 is 0. So एरिया वेक्टर ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करके एंगल लगा के सॉल्व करो. एंड इसका ओके चलो एरिया ए ऑन लगाओ. इसका स्मॉल साइड इज ए बोल के लिखो. स्मॉल साइड मतलब एरिया कैन बी प्लेट का एरिया ए स्क्वायर आएगा. राइट, सादिक टेल मी थर्ड सरफेस का बोलो. इसका एरिया वेक्टर कैसा रहेगा मालूम है सात्विक? आउटवर्ड नॉर्मल, आपको ड्रॉ करना पड़ेगा आउटवर्ड नॉर्मल. ओके, सो एरिया वेक्टर ड्रॉ किया. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, एंगल इज 180. सो ई ए cos 180 degrees. So cos 180 is -1. So minus E A.
what is the area of this plate is square plate है ना, a square. So this is 5 3. ऐसा each flux find करो. Cos 180 is -1 and area of this plate इसका plate का find कर रहे ना, area is a square. ऐसा 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. So 5 3 and 5 4 are EA square. 5 3 is minus EA square, and the other one is 0. Okay, 5 एक ही आया ना, 2 ही आया, माइनस ए स्क्वायर एंड Plus 8. Yeah. कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, राइट? ई नॉट डाल दो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट, Yeah. बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वही यूज करने का. हाँ, सो टोटल फ्लक्स इज हाउ मच? Do we add everything? हाँ, ऐड करने का, स्केलर क्वांटिटी ना, ऐड करने का. 0. 0, टोटल फ्लक्स इज 0. श्रीराम इसका फाइंड करो, इसका बोलो, इस सरफेस का फोर्थ सरफेस का बोलो, इस सरफेस का लास्ट सरफेस का एरिया वेक्टर इज राइट साइड है लेफ्ट साइड है? हाँ, आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ है. नाउ व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन है, एंगल इज 0 0 0, सेम डायरेक्शन 0, ऑपोजिट डायरेक्शन इसको क्या बोलते हैं? 190 बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन 180. ओके, सो 5 4 विल बी E A cos 0. So cos 0 is 1. E into area of this plate is A square. So 5 4 is EA square. Other than that, everything will be 0. देखो इस 5 surface, 5th surface का area vector like this, electric field is like this, angle is 90, 0. 90 वाला always 0 flux. Okay, so total flux add करने से 0 आएगा. So one very important thing you have to understand is, whenever any 3D surface is there, uniform field is there, and there is no charge inside, then total flux is always 0. Total flux is always 0. Okay, note बोल के लिखो. When 3D surface, uniform electric field, and no charge inside, then the total flux is always 0. Okay, so मतलब कभी भी टोटल फ्लक्स पे तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. 3D सरफेस है, यूनिफॉर्म फील्ड है, देयर इज नो चार्ज, टोटल फ्लक्स इज 0. ओके, चलो अलग क्वेश्चन करो. फ्लक्स फाइंड करना आने का, देन ओनली गॉस लॉ. मान लो there is a cylinder. Okay, electric field in the x direction, that is they given as E equal to E naught I cap. Okay, इसका लेंथ है L. Now find how many surfaces are there? First one, second one, and third one. Third one is curved surface. Okay, try to find flux phi 1, phi 2, phi 3, and total flux. इसका रेडियस इज R. So phi 1 is E naught pi r square. Like if we take this one as the first, E naught pi R square. Okay, then the other circle is minus E naught pi r square, okay. and the curved surface is 0. Total flux is Total is 0. because 3D surface charge वो नहीं है. Understand? सात्विक understanding 3 surface का first surface, second surface silent होता है. I doubt I'm getting, that's why I'm asking many times. Sriram, understanding? So this is first area मान लो, second surface and third surface. Tell me Sriram, इसका इस surface का area vector is like this, and if you see the angle between them, this and this 180, cos 180 is -1 लगाने का, and is a uniform electric field है. समझ आ रहा है? Okay, चलो. Now इसका
कोशिश करेंगे। नो करो। एक क्यूब है बट इट इज नॉट एट ऑरिजिन, समवट दूर में है। ओके, नो सॉल्व करो इसका। इज आस्किंग कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। ए का वैल्यू आल्सो गिवन 1.0.1 मीटर एंड ex हाउ मच दे गिवन x डायरेक्शन में अल्फा x पावर 1/2 अल्फा वैल्यू इज आल्सो गिवन, मतलब 800 x पावर 1/2 बोल के दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इन x डायरेक्शन। ex है ना, x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इज देयर। कितना है 800 E is equal to 800 x power 1/2. Okay, electric field is given to you. Now he's asking calculate the flux through the cube, complete flux through the cube. 0. Why? Because it's uniform electric field and there's no charge inside. That only? Sunway? No. Wait, no, it's not Because- uniform. हाँ, field. यूनिफॉर्म नहीं है, ये x पर डिपेंड हो रहा है। That's why लास्ट नहीं तो हाँ और डेफिनेटली आपको एक एक का फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। 90 वाला यू कैन लीव, 90 वाला ऑलवेज 0 राइट, cos 90 मतलब इस सरफेस एवरीथिंग गॉन, ओनली लेफ्ट साइड एंड राइट साइड रहेगा, दो ही प्लेट रहेगा ना, ऑल आर 0 ओनली। हाँ, सो इसको 1 मान लो, इसका 2 मान लो, फ्लक्स फाइंड करो। Yeah, that's a distance. Distance is A. From here to here is also A only. Okay. First surface I will try to find. Area vector लगाओ. Area vector is outward normal. So phi 1 will be EA cos 0, cos 180, right? Okay. E is how much they given? 800 into distance is how much? A plate origin से कितना दूर में है? A distance, right? So A power 1/2. तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में आई एम पुटिंग दिस वन। ओके, कितना डिस्टेंस दूर है प्लेट, वो डिस्टेंस एक्सिस। एरिया ऑफ दिस प्लेट इज हाउ मच? एरिया ऑफ द प्लेट इज A², ओके, इनटू -1, cos 180 is -1 एंड A वैल्यू आल्सो गिवन 0.1। पहले करो, ऐसे छोड़ देंगे लास्ट। 800 इंटू A², A पावर 3/2 राइट, -800 A पावर 3/2। नो, फर्स्ट सिमिलरली फ्लक्स phi 2 फाइंड करो। Plus 8,000 A power 3/2. प्लस 800 8 A power 3/2. सेम। हाँ, देखेंगे फ्लक्स phi 2। हाँ, एंगल इज एरिया वेक्टर ड्रॉ किया उस सरफेस का, दोनों एंगल इज 0 डिग्री, EA cos 0 राइट, cos 0। ओके, E इज हाउ मच? 800 इंटू एक्स के जगह में क्या डालूं? दैट प्लेट इज हाउ मच डिस्टेंस ऑरिजिन से? 2A. A प्लस A, हाँ, A प्लस A राइट, A प्लस Yeah, A 2A. कितना होगा? 2A। सो 2A होल पावर 1/2 इंटू एरिया ऑफ दिस प्लेट इज हाउ मच? A² इंटू 1। So मेरा I think this is you can write as root, right? So 800 root 2 A पर 1/2 A पर 3/2 A प्लस है ना। now आपको phi 1 टोटल फ्लक्स इज, दोनों ऐड करो। I can take common how much? 800 A पर 3/2 कॉमन दिया तो क्या बचेगा? पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे, √2 -1 एंड A के जगह में 0.1 लगाओ, खत्म हो जाएगा। सो 800 into 0.1 whole power 3/2 into √2 -1 is answer। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही करने का, there is no other way। एंड अदर सर्फेसेस का why we are not taking? because it is 0, 90 डिग्री है ना, एंगल 0 हो जाएगा।
चलो करो नो, सेम मॉडल्स करो, सम क्वेश्चंस, आपको आइडिया आ जाएगा. चलो. Now tell me what is the total flux coming from the cube? 0? No, right? Because alpha x, non-uniform field. Any one condition is not satisfied, then colors. देखो charge q is also inside. Wanted to keep, but उसका कुछ role नहीं है. And he told EY and EZ is 0. मतलब only x direction में electric field is there like this. Now कितना होगा? E is equal, कितना दिया? E is equal to alpha के जगह में 400, x के जगह में x, right? Alpha, that's it, right? X. हाँ, खत्म. And side they given as 0.1 meters, and so and from origin से their a distance also 0.1. First plate is 0.1. Sir, is the answer 0.4? Very good. 0.4 Newton meter square per coulomb. So इधर भी सेम है ना, इस प्लेट का ओनली विल बी देयर. इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, इसका एरिया वेक्टर इज ऐसा. Satik, how much you got? Doing ना कर. 0.4. हाँ 0.4. आया, बोलो आंसर. आया. आया स्विंग आपको. श्रीराम आया आपको? ओके, हिजा आया आपको? गॉट हिजा? Yes. हाँ. चलो चलो, सेम मॉडल सिलेंडर का दिया. इलेक्ट्रिक फील्ड इज 50x x I cap में. So E is equal to 50x is given to you, and this is 1 meter from origin से, A भी 1 meter है. Find the net flux through the cylinder. कितना flux आ रहा है cylinder से. And area of cross section they given directly, and length also given 1 meter. कर्व सरफेस तो पूरा जीरो हो जाएगा ना, एरिया वेक्टर ऊपर है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड से. कर्व सरफेस का फ्लक्स तो जीरो है, ओनली ये दोनों एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया.
12.5. 12.5. Yes. So 12.5 1 into into 10 power minus 2. so 1.250 आएगा. 1.25 approximately. Flux is good. आपको गया शिवंगी? How much you got? 125 into 10 power minus 3. Okay. Divide किया तो 1.25 आएगा. 1.25 into 10 power minus 1. मतलब 0.12 something. Okay. So these are the things. और एक डेरिवेशन इज देयर, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे. देन गॉस लॉ. एक और दूसरा डेरिवेशन क्या है? एक डिस्क है. एक डिस्क है. हियर आई पुट ए चार्ज. ओके, हियर आई पुट ए चार्ज एक्स डिस्टेंस दूर में. इधर से कितना फ्लक्स पास हो रहे हैं इन द डिस्क में, वो लर्न करने का, उसका फार्मूला डिराइव करेंगे. सी डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं? बाय बिकॉज आपको व्हेन यू सी द पीवाईक्यूज में सम आपको डेरिवेशन करना पड़ेगा. डेरिवेशन करके डीक्यू लेके सॉल्व करना पड़ेगा. इफ यू सी क्वेश्चंस यू विल अंडरस्टैंड. दैट्स व्हाई टॉपिक वाइज आप करेंगे तो समझ में आएगा. आई पुट ऑलरेडी अपलोडेड इन द वेबसाइट में. ओके, सो एक बार करो. वो डिस्क में करने वाले, देन विल गो फॉर गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन. दैट इज द लास्ट टॉपिक. मतलब 3 classes to 2 classes we will try to finish the chapter. Okay. Okay.